गुरुदेव, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करना है पर उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं। लेकिन ज्योतिषीय कुंडलियाँ तो हमारे जीवन में मिलने वाले फलों की भविष्यवाणी करती है। इन दोनों बातों को हम कैसे समझें? हाँ, एक तो जो हो रहा है और जो तुम्हें करना चाहिए, दो बात होती है। कुछ हो रही है बाहर और तुम्हें कुछ करने का मन कर रहा है। तुम्हारा अधिकार किस में है? जो तुमको करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और जो हो चुका है उसका फल रूप में आ रहा है अभी, उस पर कैसे है तुम्हारा अधिकार? उस पर किसी का अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण ने यही क्या कहा कि जो तुमने पेड़ लगाया, ये लगाने का मन हुआ, लगाया, अब पेड़ में फल आ गया या फिर फल नहीं आया, इस पर तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ना। तुमको पूछ के तो फल नहीं आया, फल आ गया। तो जो फल कर्म का फल है, सारा संसार कर्म का फल है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मगर जो तुम्हें करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है। ये सूक्ष्म बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। ध्यान में बैठ के देखो, कभी एक लगता है कि बाहर जो चीज़ें हैं ये कर्म फल है, इस पे अधिकार नहीं है हमारा। वो हो रहा है, मैं उसको बदलने के लिए तुम्हें जो चेष्टा कर सकते हो वो तुम कर सकते हो। अब बारिश हो रही है, ये कर्म फल समझो। अब तुम्हें भीगना ही नहीं भीगना, ये जो तुम करते हो वो तुम करो। बारिश पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, भीगना ना भीगना तुम्हारा अधिकार है। कोई तुम पर गुस्सा कर रहा है सामने से, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मगर उस गुस्से को तुम कैसे ले सकते हो, या नज़रअंदाज कर दोगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, उसको अंदर नहीं लोगे, ये इस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम क्या करना है उस पर तुम्हारा अधिकार है, जो हो रहा है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब है आगे जो होना है उस पर भी अधिकार नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि जो तुम कर रहे हो इससे आगे का होना है। समझ में आ रही बात? आगे जो होना है उस पर अभी तुम्हारा अधिकार है, अभी जो हो के जिसका फल मिल रहा है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, ताकि हो चुका है वो। ये बात है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ऊपर सभी लोग कह देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, जो फल मिलता है मिलने दो, ऐसा करके एक बहुत उस पे बोल देते हैं लोग, ऊपर ऊपरी की बात, मगर इसमें बहुत गहराई है, सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। Gurudev, through our Jyotir Vastu Academy, we are serving authentic, sacred science of Jyotish and Vastu. More than 500 students across the globe, including Russia, Japan, US, Mongolia, Europe, China, are studying Jyotisha and Vastu. What is your vision for students interested in studying Jyotisha? That's good. It's good. Study Jyotish, and it gives you a broader vision. You know, for the happening in the world, in life of a person, it gives you a deeper vision. You know how time and space influence you. That's what it shows, and it's a study of time and space in relation to one's life and the events in life. And that's where it gives you the road map. When an incident happens, and you usually attribute that incident to people around you or yourself. Now, with a deeper vision,
you say, oh, this incident is happening because of these planets. The retrograde of Jupiter, that is what it is making things happen like this. Then what happens, instead of you frowning at your spouse or people around you, you put the whole blame on the planets, and you can't get angry at the planets. So it saves you from a lot of heartburn, disappointments, and mental agony. Otherwise, we reel in anger, jealousy, greed, and agony, uncertainty, all these negative emotions. Jyotish helps you to, steer through these things and helps you to see, oh, this is all happening because of such and such a planetary combination. And it all changes. It also gives you a hope. Don't worry, it's going to change. Everything is going to be reversed. And so, on one hand, it gives you understanding to be more centered and strong. On the other hand, it also gives you a hope for the future. And it also cautions you, okay, these are the time that you have to be a little cautious. And it is not fatalistic science, mind you. Jyotish is not a fatalistic science. It also gives remedies. And the remedies are all this, pujas, the japa, the meditation, singing, these all, and then charity, all this is part of those remedies. And so, though you may not be able to completely nullify the impact of it, but you can reduce it to great extent. Yeah. Gurudev, we welcome nearly 100 students who have come to ashram in person for their Jyotish retreat classes from all over the globe. With your permission, can we take few questions directly from them? Yeah. Go ahead. Gurudev, my name is Ashish Meswani from the United Kingdom. Many people outside of India have a prejudice against Jyotisha. How do we make this knowledge acceptable and accessible to them? Yeah. I think, be seated. There is a lot of interest. You look at the interest. Some people have prejudice against everything. They have prejudice for even spirituality, meditation. And slowly and gradually they'll come over it. That also depends on the Jyotish. You will see when Jupiter is low, the interest in spirituality will be low in the planet. And now when Jupiter is getting exalted, there will be wave of spiritual renaissance and people would be more interested in the genuine spirituality. So you know that. So see it also, see all those things. If someone is agnostic and cynical, you can see in their chart, this chart, Jupiter must be debilitated, or Mercury must be combust, so they don't have so much awareness. So for a Jyotishi, it is not a difficult thing to figure this out. Yeah. Guruji, what is the role of a Jyotishi to bring harmony in a sadhak's life? Just encourage them to continue doing their sadhana even when one doesn't feel like doing it. There are some phases in life where you feel like dropping and not doing any sadhana. In those moments, if they take a determination, in those moments, if they take a determination and they say, no, I will continue, come what may, for next 30 days, they will sail through that rough weathers.
जय गुरुदेव गुरु जी। माय नेम इज़ ऋतिका फ्रॉम पुणे। हम सब अभी ज्योतिष का पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये करते टाइम हमें काफ़ी समझ आता है कि काफ़ी डेडिकेशन लगता है, एफर्ट लगता है, क्योंकि बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत पावरफुल भी है। बट फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि है ना, ज्योतिष तो वीक हार्टेड लोगों के लिए है, वीक माइंडेड लोगों के लिए है। तो ये माइंडसेट में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं गुरुदेव? तथाकथित ज्योतिषियों ने बहुत सारा ऐसा एक भ्रम फैला दिए गए। जब टेलीविज़न खोल के देखते हैं क्या क्या बोलते हैं ज्योतिष के बारे में। मैं तो ऐसा ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ टेलीविज़न। जो भी 1-2 मिनट भी देखा तो लगा कि बाप रे बाप, कितना अज्ञानता फैला रहे हैं। तुम ये करो, वो करो, सिर के ऊपर चावल चढ़ाओ, ये रखो, और किसी को बोलो जाके कौवे को वो खिलाओ। अरे कोई व्यक्ति कोई साउथ अमेरिका में रहते, कहाँ वहाँ कोई कौवे ही नहीं है। वो बोलता मैं कौवे को कहाँ से खिलाऊं। अब जहाँ पर कोई गाय नहीं, वो बोलते कि इनको गाय को खिलाओ गुड़। वह पहले गुड़ होता नहीं, दूसरे गाय नहीं होती है। इस तरह से उपाय वगैरह बता बता के लोगों को भ्रमित कर देना लोगों का विश्वास उठने का कारण हुआ है। इसलिए हमें इसको बहुत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब पेश करते हैं हम, तब ये स्वीकृत होगा, ये स्वीकार करेंगे लोग, क्यों नहीं करते। आपको समझना चाहिए क्या क्या होता है ज्योतिष के हिसाब से। समोसा के ऊपर हरा चटनी है ना, लाल चटनी वाली बातें चलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। क्या क्या हम लोगों ने धर्म के नाम से, अध्यात्म के नाम से, पाखंड बहुत फैल गया इस नाम से। इसीलिए लोग इससे दूर भागना चाहते हैं। यही तो कारण है। तो इसमें से अपने को बड़ी नाजुकी से निकाला पड़ेगा। Jai Gurudev. I'm Aryan from London, and I wanted to ask that a lot of people have a notion that as a Jyotishi, when we consult others, we accumulate a lot of karma. This eventually scares us from giving consultations. No, 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 no. Don't worry. No karma. Yeah. You are just saying what is there. That's it. And no. Okay. No, So, not worry. are you taking care of our karmas? That's my job. Me? Yeah. Gurudev, I am Oksana from Russia. Dear Gurudev, most of the Jyotish remedies are around worshipping Shiva, Krishna, Vishnu. However, we live in Christian societies. What kind of remedies should we subscribe to for Christian societies, if it is possible, please? Well, when the Jyotish developed, there were not many religions. There was no religion at all. There was only way of life. At that time, there was no religion. So they just classified the energies, the beautiful energy, the divine energy and demonic energy with some names. And with some, they also found there's some forms for it. So this is beyond religion. If you see through religion, you will be completely confused. It's not. So Jyotish is beyond, because at that time there was no division of human society at all. You have heard the biblical tower, story of biblical tower, right? In the beginning there was only one thing. So if you see that Christianity, the original language of Christianity is not Russian, it is Hebrew.
And from beyond Hebrew, it is, if you go deeper into Hebrew or Latin and Greek, it becomes so close to Sanskrit. And if you see Sanskrit, and you see, wow, you will be astonished. 80% of English language is all Sanskrit. So, the mantras are beyond religion. So, because Jyotish existed long before Jesus Christ was born. Several millenniums, from billions of years this has existed. So, we should de-link it with the religion, but present it as a pure science of consciousness. Gurudev, Jai Gurudev. We are doing Jyotish and it's an excellent opportunity to do Jyotish in this academy. Our experiences are getting very enriched, but we already are middle-aged. What should we do so that in our society, the government or the education ministry can take certain Jyotisha aspects right in primary school or secondary school so that our children coming in the future can actually take a foundation, just like in the Gurukul? No. This is like putting PhD knowledge in the primary school. That we should not do now. Neither the world is ready and it's not necessary. So this is not the basics. Nobody teaches a child Jyotish when they are born. They only learn alphabets and then they learn everything. Jyotish comes in much different, beyond adolescence. Even adolescent level, you can't teach Jyotish. You have to teach grammar and other stuff. So, don't be too enthusiastic to introduce this in the schools and colleges. Yeah. Jai Gurudev. Huh? Guruji, I'm Seema from Australia. गुरुदेव, किसी को मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिष और काल ज्ञान में क्या अंतर है और हम ज्योतिष स्टूडेंट्स को काल ज्ञानी बनने की ब्लेसिंग्स मिल सकती है क्या? काल ज्ञान साधना से और भक्ति से, निष्ठा से प्राप्त होता है। ज्योतिष बुद्धि का ज्ञान है, ये बुद्धि के अतीत का ज्ञान है। काल ज्ञान बुद्धि के परे के चेतना से उपजा हुआ ज्ञान है। ज्योतिष में फिर भी हम हिसाब किताब लगाते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वहाँ पर गणित है। गणित के बिना ज्योतिष नहीं हो सकता। गणित उसमें बहुत प्रमुख रोल लेता है। अक्सर आप पाओगे कि यदि सही गणित लगाओगे वो वही होगा जो काल ज्ञान से भी प्राप्त होगा। जय गुरुदेव, आई एम तनया फ्रॉम यूके and I wanted to ask that in this age there's a lot of use of AI and AI generated answers regarding Jyotish as well. So should people reach for those answers on AI? You know very well, AI is not always reliable. It's not always reliable, right? Sometimes it can also make mistakes, right? ChatGPT says, no, I made a mistake. Doesn't it say? Yes. Yes. Does it say? Someone said it says. I made a mistake. So, if ChatGPT can make mistakes, so AI, you should give them that margin. Okay.